And firstly, welcome to our channel for Mazo. It's Mhm. it's amazing to have you on our channel, and I look forward to have a lovely conversation with you. Same here, same here. I'm feeling the same vibes, and thank you for hosting this interview, and thank you for welcoming me. It's a pleasure. So, to start with, पहले तो जानना चाहेंगे कि how are you doing? How I'm doing? So I'm doing very nice, and this is the time in my career, in my life, when I'm struggling with a lot of things, but at the same moment, I'm very peaceful, enjoying. So this is a phase at this age. I'm like learning new things, experiencing new things, and it's all happening very beautifully. कभी कभी आपको when you are in teenage you have a lot of questions ना, why it's happening like this, क्यों ऐसा हो रहा है, or I have different plans for my life. That is not happening, but at this stage I'm like, thanks God. Lovely. So, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएं कि हाउ हैव यू स्टार्टेड इनटू एक्टिंग फील्ड एंड क्या इंस्पिरेशन रही है और कहाँ से वो शुरुआत हुई है, तो इफ यू कुड टेल Beautiful, अस एंड द ऑडियंस अबाउट दिस. beautiful question. Like एक artist को और क्या चाहिए कि लोग उसे सुन रहे हैं. So it started like I was in seventh or eighth standard, and I was in love with a girl, and so I started writing. What happens, आपका love आता है आपके life में तो वो art को भी छेड़ कर जाता है. So I started writing poems. I started writing stories. Then my thoughts. I wrote a drama which I directed at school level in ninth standard. So it started like that. तब मैं गोरखपुर में था. गोरखपुर is a city in eastern part of UP, and it's a very beautiful city. I wish, and I'll suggest all of you, whoever is listening us, कि आप गोरखपुर जाना. Very spiritual city. So वहां से start हुआ, and then in 10th standard I was like मेरे board के preparations चल रहे हैं, and I'm घर पे बोल रहा हूँ अच्छा मेरे extra class है, and I'm going for auditions for the regional movies in Gorakhpur. Because Gorakhpur is kind of hub, like Mumbai is hub for Hindi movies, Gorakhpur is a hub for regional Bhojpuri films, then films from Bihar. So it started like that. और उसके बाद I was like craving कि कब मैं गोरखपुर छोड़कर दिल्ली या मुंबई जाऊं. I moved to Delhi in 2008, just after my 12th standard exams. And then I joined a theatre group, Chilsack Chili's, under Sachin Gupta. Sachin Gupta is a very senior name in theatre. And now he has directed around 4 Hindi movies. So I joined him, his theatre group, and starting from selling the tickets, because that is a process. You join a theater group, and that is how you make friends, you make buddies, and the director, like, आप जब तक एनर्जी शेयर नहीं करोगे आपके प्रोज एंड कॉन्स समझ में नहीं आते हैं डायरेक्टर को. So it happened like that, and it was a very like smooth process in my life. Art landed in my life like very smoothly with love. So, and that was the time I totally decided. It happened in 9th or 10th in school days only, that I decided I want to become an actor. And God has praised me, and like blessings from my everyone, like my friends, my family, they're supporting me unconditionally. Like sometimes it happens in life of an actor, you're struggling with money as well. But my family, my friends, they never let me know, that I'm not earning. So once you find that energy around you, so आपका जो life का motivation और aim होता है वो और strong हो जाता है. So it became like that, and I joined theatre group in 4th year. I was doing engineering, software engineering, and I was very good in coding. So, and even my director Sachin Gupta was a software engineer, so that was a bonding between me and him. So I did beautiful shows like Kailash Nath Bhatt's Madhumati, Wake Up Call, starting from small character. For the same play, I did lead as well. I played Kailash Nath. That is a very musical play. We did in Delhi, we did in Mumbai.
when I was in fourth year of my college, that was 2012. I got a Hindi film, Paranthe Wali Gali. I played, my character's name was Faraz, and it was like a guy who is always after girls. And, like that was the energy at that time. I was in college, and हम college time में भी चिल्सैक चिलीज के हमारा शो होने वाला था. We used to go to Delhi के colleges जहाँ पे ज्यादा अच्छी लड़कियां हैं, वहां जाके मैं पोस्टर लगाऊंगा. So it was kind of that. So and then it was very smooth, and I would say कि मैंने जैसा प्लान किया था और जैसा मुझे इंट्यूशन आया था स्कूल डेज में कि मुझे कॉलेज के जस्ट बाद मुझे एक हिंदी फिल्म करनी है. आई गॉट दैट फिल्म पराठे वाली गली. दैट इट्स अ वेरी म्यूजिकल. यू लाइक द सॉन्ग्स, के सॉन्ग है, वसुंधरा दास ने बैकग्राउंड स्कोर दिया. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. बहुत इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स भी हैं उसमें. आई डिड दैट एंड आई मूव टू मुंबई. मुंबई आ गया. I started giving auditions. I thought I'm a star. Now every casting director is going to, oh, Prabhakar, please, 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 you're most welcome. It not happened like that. I've been through many rejections, and it happens at every level. Sometimes आपके projects बन के बिगड़ जाते हैं. So a lot of rejections happen, and a lot of beautiful, magical things happen. And that is the way I become an actor. So it's still the seed of acting is blooming inside. Like abhi bhi wo ped ruka nahi hai, उग रहा है. It's like चल रहे हैं उसकी आर्ट के branches निकल रहे हैं, नए branches निकल रहे हैं. So even at this stage, I've started learning like new instruments. I'm learning flute. Started learning drum. A lot of new things are happening. So that was my story in short, I would say. It's so great to hear these stories, that how passionate you all are and how from small it starts and how you all go till now. It's definitely motivating as well, and I really enjoy listening to such stories. So thank you for sharing, and thank you for letting us know that how you have been to the thing that you are doing right now. And as you said, there's no stop to it. It will keep growing, and that's great that you're learning so many new instruments, because you just keep learning new things. So great. I mean, it's kind of inspiring me as well. Maybe I should go and try on something new now. Lovely. You should. And sometimes आप अपने लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं. Sometimes what happens, oh, I did it so beautifully. मैंने नया नोट सीख लिया. Wow, Prabhakar. You appreciate yourself, no? Wow. Exactly. So आप खुद के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो कभी-कभी. Yeah. So talking about, we have seen you in television series like गुम है किसी के प्यार में and छोटी सरदारनी. तो अगर बात करें तो how has been the experience shooting for these serials? Beautiful. I was so earlier I was always motivated to do films. That's why I did around 10 short films. One of the short films, Sleepwalker, was even went to Prayagraj International Film Festival. So my motivation was always to do films. So I never did serials. I never went for TV. I don't know. I have never experienced. Still, that was a thought in my mind. So these serials has like they have broken that shed which was on my like a bunch of thought was there कि मुझे टीवी नहीं करना है, बट ये करके मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड द टीम इज लाइक वेरी पैशनेट. यार ये टीवी ऐसे ही नहीं, आपके कोई सीरियल्स बहुत टॉप पे चले जाते हैं, लाइक गुम है किसी के प्यार में, छोटी सरदारनी आर परफॉर्मिंग सो वेल ऑन द टीवी. सो इट ऑल गोज फॉर द टीम वर्क. जब तक टीम आपका काम नहीं करेगा, इट्स नॉट लाइक एक एक्टर आके आपका सब कुछ अच्छा कर देगा और एक डायरेक्टर आके अच्छा कर देगा. तो आई लर्न दैट फ्रॉम देयर. फिल्म्स में भी हमारा सेम है, बट टीवी में क्या होता है, आपको बहुत जल्दी बिकॉज वॉचिंग ऑडियंस को चाहिए, कंटेंट चाहिए. सो बहुत ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं कि आप 18 घंटे शूट करना पड़ जाए, और आपकी टीम जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, दे आर लाइक वर्किंग फॉर 24 आवर्स. सो वो भी मोमेंट्स होते हैं, बट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. आई वुड ऑलवेज लव टू डू टीवी एज वेल. We'll be definitely looking forward to see you in many more projects on television as well then.
and you are going to watch it. तो फिलहाल हमने काफी सुनने में मिल रहा है कि जो आपकी रीसेंट मूवी रही है मुकाम, सो उसके लिए यू हैड वेंट टू अयोध्या. सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ योर्स काफी सुनने मिल रहा है कि इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड सो हम आपसे खुद से ही जानना चाहेंगे कि व्हाट हैज कैसा रहा है एक्सपीरियंस, एंड व्हाट इट वाज लाइक. Correct. So I'm very excited and thank you that you are going to, you are asking that question, because that is something which I have experienced and that experience has changed my thought process. Earlier, when I was very much passionate for acting, but what exactly is acting, I was not knowing. Now I know it's just life, it's just living. So मुझे वो चीजें सीखनी थी, तो आई यूज टू मैंने विकी कौशल का पढ़ा था, उनके इंटरव्यूज देखे थे. विकी कौशल सेड कि मसान के लिए ही वेंट टू बनारस, ही स्टेड देयर फॉर 5 days. So that was the motivation for me while doing Muqaam, because Muqaam में I am playing a character who is a auto rickshaw driver. So वो गेटअप लेना, अचानक से आप मुंबई से जाके आप कैमरा के सामने एग्जैक्टली ऑटो ड्राइवर नहीं बन पाओगे, आपको कोई कितना भी गेटअप दे दे. वो गेटअप लेना प्लस बहुत चीजें थी जो मुझे समझनी जरूरी थी, तो मैंने अपने आप को 1 week टाइम दिया. आई वेंट टू अयोध्या, एंड अयोध्या इज समथिंग लाइक वेरी स्पिरिचुअल to me, and I belong to Gorakhpur, so Gorakhpur Ayodhya distance is just 2.5 hours hardly. So मैं बचपन से भी जाता रहा हूँ. तो I went to Ayodhya, I stayed in a dharmshala, and I start understanding or preparing a character with very little props. I bought a chappal, हवाई चप्पल, एकदम जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइव करते हैं घिसी हुई हवाई चप्पल पहनते हैं. So I bought a हवाई चप्पल over there. And I started roaming around the city, घाट्स पे टहलो, ऑटो वाले के साथ बैठ गया, ऑटो वाले के साथ थोड़ी भोजपुरी, I know भोजपुरी because of my roots of UP. So उन लोगों के साथ बैठना, दिन भर घूमना, कि मतलब सिर्फ मैं अपने अंदर वो कैरेक्टर को कंटेंट डाल रहा था कि वो कैरेक्टर 1 हफ्ते के अंदर अगर इतना जी लिया तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट होगा जो मैं इमेजिन करके नहीं डाल सकता. So मैंने वो 1 हफ्ता दिया, and thanks to विकी भाई और राजकुमार और there are number of senior actors who have been performing like this. So and that was there. So my character's name is Tahir, and finally Tahir was there. Everyone saw on the set that Tahir was there. Even if I'm standing listening to my friend Chandu in the character in the scene, you will find that I am behaving like an auto rickshaw driver. It's not कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर का कोई एक बिहेवियर होता है. हम सब एक काम करते हैं. समवन इज इन कॉर्पोरेट, समवन इज इन सेल्स, समवन इज इन मार्केटिंग. तो वो काम का एक लेयर आपके ऊपर चढ़ा होता है. दैट डजंट डिफाइन योर कैरेक्टर, बट दैट लेयर इज देयर. सो आई लर्न दैट सिटिंग उनके साथ चाय पी के, उनके साथ ऑटो में टहल के, भैया मुझे 10 रुपए दो ना, ऐसे बातें करके उनसे उनको 100 रुपए दिया, अरे सुनो ना भैया मुझे ऑटो चला लें दो, अरे नहीं आप हमारा ऑटो कैसे चलाएंगे, अरे हमारा खराब हो जाएगा. बट आई लर्न लाइक दैट. सो वो बहुत अच्छा प्रिपरेशन मुझे मिला वो 1 week, एंड देन इट वाज वेरी ब्यूटीफुल शूटिंग इन अयोध्या. अयोध्या के साथ उस वक्त क्या चेंजेस हुए थे, सॉरी अगर आई एम एलेबोरेटिंग मच बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू टॉक अबाउट. अयोध्या के साथ क्या हुआ था कि वहां पे बिकॉज ऑफ नाउ अयोध्या में दिवाली मनाना स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में. सो कैमरा के साथ वहां की लोगों की फेमिलियरिटी बहुत आराम से हो गई थी. दे वर नॉट कि अच्छा क्या चल रहा है, शूटिंग चल रही है और व्हाट, बिकॉज वहां पे मीडिया बहुत ज्यादा पहुंच रही थी, हिंदी मीडिया, जी न्यूज, स्टार न्यूज, एंड दैट वाज अ टाइम, दशहरे का टाइम था, ऐसा हम कुछ शूट कर रहे थे. तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई. हमने गुरिल्ला शॉट लिए, हमने कभी कोई भी लाइव ऑडियंस को डिस्टर्ब नहीं किया है. वी हैवंट लेट देम नो दैट वी आर शूटिंग समथिंग. द कैमरा इज ऑन द टेरेस, अनदर कैमरा इज देयर बिसाइड द ब्रिज, एंड आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग. देयर वर लोग, अरे यहाँ चलो, यहाँ चलोगे, हमके 10 रुपए लगे, हाँ बैठो. तो आई एम जस्ट ड्राइविंग. वो सीन्स क्या होता है कि बाद में एडिट में काफी सीन्स निकल जाते हैं टू मेक द मूवी वेरी प्रिसाइज एंड शॉर्ट, सो दैट हमारा स्टोरी से हम ना हटें कहीं पे. सो बहुत ब्यूटीफुल.
I would say that Tahir was in me at that time and I could feel it. So that was the way I prepared for it. We can see, the happiness, the excitement, जो जैसी question आया and you're so excited Yeah. to share all those things. So that only tells कि क्या तैयारी रही है, क्या preparation हुई है and कैसी journey रही है. So we are glad to hear that such interesting preparation and efforts you had put in and you had enjoyed shooting for this movie. Right. So there's this thing ki you have shot for serials also now and you have shot for movies also now. So what's your preference more for? Wow, another good question. See, to be very honest, I'm not at that level जहाँ पे मेरे अपने preferences मैं रख सकता हूँ. मेरे पास ऐसे projects की बाढ़ नहीं लगी हुई है. First thing, जब लगेगी तब preferences I'll think, but मेरा interest serials करने के बाद जागा है for TV. Films के लिए मेरा interest बचपन से रहा है. Because if I say कि मैं एक process में जा रहा हूँ एक character की preparation करने में, so that is the life I want to live. That is the art I want to live. No, all the time I'm playing a character inside out. So that is the beauty of like movies. I don't know, serials में भी ऐसा होता होगा, but movies का ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप गए हो एक zone में and then you're shooting. आप एक सीन करते हो, मूवीज में ऐसा होता है एक सीन करते हो, बहुत आराम से करते हो, उसमें डूबते हो. आई एम नॉट गोइंग टू से दिस इज अ स्टेटमेंट, बट जो मुझे अभी इस एज पे इस इतना काम करने के बाद समझ में आ रहा है कि मूवी में आप बहुत डूबते हो, सीरियल्स में आप ऊपर की लहरों में होते हो, वो लहरों में खेलते हो, एंड मूवीज में आप डेप्थ में होते हो. सो दैट इज द डिफरेंस आई वुड से कैसा है. बट यस, फॉर मूवीज माई लव इज ऑलवेज 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 इट्स. अगर वो मुझे दुत्कार भी देगी तो मेरा वन साइडेड लव मूवी के लिए हमेशा रहेगा. बचपन का प्यार. करेक्ट. Okay, so it was great having these conversations, but agar before ending this, there's to the audience and viewers of our channel. So you are ending it? I thought that we are going to talk like hours. Definitely, I could have gone and on, but definitely certain time limits. So because of that, if to end before ending, there's any message if you would like to give to the audience and the upcoming actors or anything that you would like to share as an advice or something for them. Thank you for listening to me. इतनी सारी जो बातें मैंने बोली, कुछ बातें आपको बोरिंग लगी होंगी, कुछ इंटरेस्टिंग लगी होंगी, तो थैंक यू कि आपने सुनी. आपको एंड मेरी ऑडियंस, आप सबको थैंक यू सो मच. Plus, this is the first time many of you must be listening to me, must be looking at me like आपने पहली बार मुझे देखा होगा. So हम फिर मिलेंगे. I'm a very interesting person. हम फिर मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे. I wish मैं जल्दी अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर आऊँ और आपके साथ बैठूं, फिर से ऐसी ढेर सारी बातें करूं. हमारी ऑडियंस अपने इवनिंग चाय के साथ हमारी बातें एंजॉय करे. Definitely, I'll be definitely looking forward to that. And it was great having a conversation with you. And I think, if we take out a topic, we can go on and on talking about those things. Correct. I mean, it's so lovely to hear you sharing your opinions. So it's I'm really happy after having this conversation. So once again, thank you so much. And team from Mazo की तरफ से भी best wishes to you for all your future projects. Thank you so much आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को. प्लीज ढेर सारे सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे, ढेर सारे लाइक्स आएंगे और प्रभाकर की वीडियो देखने के बाद ब्लेसिंग्स और आ जाएंगी. थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Take care. Hi, my name is Prabhakar Srinet and you are watching me and listening to me on Femenzo. Please like, subscribe and share if you like this video.